आज का मेरा टॉपिक साइंस एज ए प्रोसेस। साइंस जो है वो बतौर प्रोसेस के है, एक तरीकाकार है। एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, डैट साइंस इज नॉट ए मेयर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कि साइंस जो है वो ना सिर्फ जो है वो हक़ाइक़ का कलेक्शन है, हक़ाइक़ का ज़ख़ीरा है, प्रिंसिपल्स और लॉस, प्रिंसिपल्स का या फिर कानून का। इट हैज़ टू अदर डायमेंशंस, इसकी दो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट, जो कि मसावी तौर पर अहम हैं। दीज इंक्लूड्स, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं? प्रोसेस ऑफ डूइंग साइंस, साइंस में होने वाले प्रोसेसेस हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड्स और साइंसी रवैये हैं। The process skills are actually the skills that a scientist use to solve problems and find answers. The process skills में क्या है कि ये एक्चुअली वो स्किल्स हैं, वो महारतें हैं that a scientist use to solve problems, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है, and find answers, और जवाबात मालूम करता है। These are actually the same skills that we also use in our daily lives to solve problems. ये बिल्कुल उसी तरह की महारतें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। Through the application of science process skills, scientists collect scientific inquiry and solve problems. Applications of science process skills की एप्लीकेशन के थ्रू साइंटिस्ट कंडक्ट साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। साइंस प्रोसेस स्किल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। साइंस प्रोसेस स्किल्स जो है वो बहुत अहम पार्ट है साइंस का। What we teach in our school reflect only the content of science, facts, theories and principles. Learning about the content of science without learning the process of science is like trying to learn a language by memorizing vocabulary words from a dictionary without understanding the nature and structure of the language. अगर हम साइंस का जो कंटेंट है, मवाद है, वो हम लर्न करें, याद करें विदाउट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ साइंस, साइंस के लर्निंग प्रोसेस के बगैर, इस लाइक, ये बिल्कुल इसी तरह है ट्राइंग टू लर्न ए लैंग्वेज। कोई हम ज़बान सीखें बाय मेमोराइजिंग, सिर्फ याद करते हुए वोकेबलरी वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी से, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। उसमें हम उस लैंग्वेज का जो है वो नेचर, फितरत और साख्त जो है वो नहीं समझ रहे होते, सिर्फ जो है वो वोकेबलरी वर्ड्स जो है वो हम मेमोराइज करते हैं। सपोज समवन मेमोराइजेस ए लार्ज नंबर ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स। फर्ज करें कि कोई एक जो है वो बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स याद करता है ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, किसी भी बैरूनी ज़बान के। डू यू थिंक ही वुड बी एबल टू रीड एन आर्टिकल रिटन इन दैट लैंग्वेज? क्या आप सोच सकते हैं कि वो उस ज़बान में कोई आर्टिकल जो है वो पढ़ सकेगा? लर्निंग वर्ड vocabulary may help someone to roughly communicate some simple thing, but will never be able to have a proper conversation with the native of that country. To be proficient user of language, one needs to understand its structure. Proficient
यूज़र के लिए किसी भी लैंग्वेज का किसी को भी उसकी ज़बान की जो स्ट्रक्चर है उसको साफ जो है उसे समझना होगा। सिमिलरली इन साइंस यू मे लर्न ऑल ऑफ द फैक्ट्स, आप जो हैं वो तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सीखते हैं। बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड वाई साइंटिस्ट चेंज और रिजेक्ट सर्टेन थ्योरीज, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि साइंसदान जो हैं वो क्यों जो है मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं वो तब्दील कर देते हैं या मुस्तरद कर देते हैं। वी ऑफ्टन हेयर पीपल कम्यूटिंग दैट these scientists one day they claim that tea के यही साइंसदान जो है एक दिन दावा करेंगे कि टी जो है फॉर एग्जांपल इज ए बैड फॉर हेल्थ, कि ये सेहत के लिए बुरी है। देन सडनली दे चेंज देयर व्यूज, फिर अचानक ही अपने ख्यालात तब्दील करेंगे एंड से इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि ये सेहत के लिए अच्छी है। और कमेंट्स और लाइक करेंगे, ओह दिस साइंटिस्ट दे कीप ऑन चेंजिंग देयर स्टेटमेंट्स, ये अपने स्टेटमेंट्स जो है वो तब्दील करते रहेंगे। दिस इज बिकॉज, इसकी वजह यह है कि वो एज ले पर्सन डू नॉट रियलाइज दैट साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट फाइनल, कि जो साइंसी इल्म है वो फाइनल नहीं होता, आखिरी नहीं होता, एंड मे चेंज एज न्यू रिसर्च suggest something different from previous knowledge due to the lack of awareness की कमी की वजह से और understanding की कमी की वजह से of how scientists gather and analyze their data, how they make hypotheses, it becomes difficult, ये मुश्किल हो जाता है, it not impossible for student to fully appreciate how scientific knowledge is generated. Science help us to know about the natural world. Science जो है वो मदद करती है to know, जानने में, about the natural world, कुदरती दुनिया को समझने में। Understanding science is more than memorizing science content. Understanding science जो है उसकी understanding जो है वो इज़ मोर मेमोराइजिंग, वो ज़्यादा मेमोराइजिंग है साइंस के कंटेंट के हवाले से। स्टडी ऑफ साइंस शुड इनेबल द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड साइंस रिलेटेड सोशल पॉलिटिकल इश्यूज। इट शुड आल्सो इनेबल द स्टूडेंट्स to make sense of new information. For example, if they read or learn something new about diet, exercise or disease, they should be able to apply the information on their lives. Understanding the process of science का जो process है उसको समझने की कोशिश करें, and scientific problem solving can also help us in making more informed decisions in our daily life. Study of science should also help our students to make such decisions as whether to buy natural or synthetic products. In 1838, two biologists, Theodore Szechuan and Mathis Sheldon and Shawan, जो हम पढ़ते हैं अपनी बायोलॉजी के अंदर, वर्किंग ऑन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, वो एनिमल्स और प्लांट सेल्स पे काम कर रहे थे। द टू साइंटिस्ट्स शेयर देयर ऑब्जर्वेशन, इन दो साइंसदानों ने ऑब्जर्वेशन शेयर की, एंड फाउंड दैट, और ये पाया कि दैट देयर वर मैनी सिमिलरिटीज़, के यहाँ पे बहुत सारे मुशाबात हैं बिटवीन दी टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो किस्म के सेल्स के दरमियान। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस, उनके मुशाहदात की बुनियाद पर दे फार्मूलेटेड ए थ्योरी ऑफ सेल, उन्होंने सेल थ्योरी जो है वो फार्मूलेट की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक द सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन लिविंग थिंग्स,
जो है वो लिविंग थिंग्स का फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स का यूनिट है. सेल एग्जिस्ट एज डिस्टिंक्ट entity and as that they perform all the functions which a living organism perform. और इसका क्या काम होता है कि तमाम जो फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ये परफॉर्म करते हैं. दे आर आल्सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बनाते हैं. हैव यू नोटिस दैट इन दिस प्रोसेस द टू biologists used a number of skills of science. For example, they made observations. मुशाहदात बनाते हैं. Draw conclusions and communicate their observations. All these skills and essential skills to solve problem and to acquire knowledge. When we limit science teaching and learning to merely science content, we not only deprive our learners from the knowledge of how scientific knowledge is generated, but also from learning science skills. Teaching the process of science means going beyond the content to help students understand how we know what we know and giving them the tools they need to think scientifically. Most important, it involves making explicit reference to the process of science. Leaderman in 2007, when scientists conduct scientific inquiry, they make observations, hypotheses, predictions, interpretations, and communicates the knowledge resulting from investigation to others. These are often called the process skills of science. Process skills are defined as process skills की तारीफ यूँ की जा सकती है. A set of broadly transferable abilities appropriate to many science disciplines and reflective of the behavior of scientists. Science a process. Initially, American Association for Advancement of Science (AAAS) developed a list of 13 science process skills. American Association for Advancement of Science ने क्या काम किया था कि एक लिस्ट बनाए थे जिसमें 13 साइंस के प्रोसेस स्किल्स थे. लेटर ए नंबर ऑफ स्किल्स, जिसके बाद बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो एडेड टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में ऐड किए गए. AAAS डेवलप्ड ए कैरिकुलम प्रोजेक्ट. इन्होंने एक निसाबी प्रोजेक्ट बनाया ऑफ साइंस का ए प्रोसेस अप्रोच. क्या है? साइंस ए प्रोसेस अप्रोच. SAPS फॉर एलिमेंट्री स्कूल के. SAPS स्टैंड फॉर साइंस ए प्रोसेस अप्रोच. ग्रुप प्रोसेस स्किल्स इन 2 टाइप्स. 2 एग्जाम थे उसमें, बेसिक एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल्स. इसमें बेसिक और इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल्स आ जाते हैं. द स्टूडेंट शुड डेवलप proficiency in basic science skills before using the integrated process skills.